Good morning. On behalf of Admission Branch, University of Delhi, I welcome you all to this webinar for graduate admissions at University of Delhi. University of Delhi always takes a lead in creating awareness among the prospective students. Keeping that in mind, we have organized today's webinar for those programs where the admission at University of Delhi is done through common seat application system. So to apprise candidates, today we have been joined by the Registrar of University of Delhi, Dr. Vikas Gupta. Sir, I welcome you on the webinar. Thank you so much. We are also joined by Professor Haneet Gandhi, Dean Admissions at University of Delhi. Ma'am, you're also welcome. That's great. So Professor Haneet Gandhi will make a brief presentation about the various admission-related policies, and after that we'll take up question and answer sessions. I request all the viewers to post their queries if they have any in the chat box. At the end of the webinar, we'll take up this session. So without taking much time, I would like to request Registrar Sir to give some opening. Thank you, Dr. Anand. A very good morning to all of you. Our Dean Admissions, Professor Haneet Gandhi, is there with me. My dear students, I welcome you all to the University of Delhi, which is a 100-year-old university. We have more than 71,000 seats in various colleges and the university departments for undergraduate programs. The admissions to undergraduate program is only on the basis of common university entrance test, which was conducted by National Testing Agency, and I hope you must have done well. Nonetheless, today, Professor Haneet Gandhi would apprise you about the various steps that are required for seat allocation system, that what are your requirements. The most important thing is that we have more than 1,500 combination of courses and colleges. So in that, what you have to do is when you apply, you must take care that you should apply for all the programs, so that irrespective of your score as of now or this thing, at least you would get a seat in this university. We have 79 programs, 69 colleges with us. We have introduced quotas for orphans also. Recently, we have introduced quota for single girl child or only girl child. Only girl child is the proper word. We need, these are supernumerary seats, one seat in each program for a only girl child, or what we say a single girl child, then orphan seats. Professor Haneet Gandhi would explain you. You must apply to University of Delhi. You must apply to all the programs which are available with us. And I once again welcome you all. And I'm thankful to my colleagues from the admission class, especially Professor Haneet Gandhi and Dr. Anand Sorkar, that they have been taking pains to make every one of you aware of what steps are required to fill the admission form for the University of Delhi. My best wishes to all of you. Thank you so much, ma'am. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. Yeah. Now I would like to request ma'am to apprise the students. Thank you. Many thanks to our Registrar Sir, Dr. Vikas Gupta, who was with us for a couple of moments, despite his extremely busy schedule today. And on behalf of University of Delhi, on behalf of our Registrar Sir, our Vice Chancellor, Honorable Vice Chancellor Sir, and on the behalf of the Admission Branch, I extend my warm welcome to all the students, the participants, and everybody who's watching this webinar, and maybe will watch this webinar in the future. We are here to share with you the modalities of admission in the University of Delhi, the things that you should take care of while filling the form, how you should go about, and what are the things that you should be careful with while filling our form. So your CUET exams are now over. आप सबके CUET के exams अब हो चुके हैं, तो अब आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर आप इच्छुक है एडमिशन लेने के, तो अब आपको उसकी कैसे तैयारी करनी है, उसके बारे में हम आपको आज सारी जानकारी देंगे। इसके साथ इसकी जानकारी देने के लिए मेरे साथ मेरे कुलीग डॉक्टर आनंद सोनकर जी हैं, और कुछ ही देर में मेरी दूसरी कुलीग भी ज्वाइन करेंगी एडमिशन ब्रांच की ओर से, जो क्वेश्चन आंसर देंगे। क्वेश्चन आंसर देने से पहले आप समझ लीजिए कि हमारी प्रक्रिया क्या है, हम किस तरह से क्या क्या चीजें आवेदन करते टाइम आपको ध्यान रखनी है, और क्या स्टेजेस हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशंस के लिए, ये हम शेयर कर लेते हैं। आप क्वेश्चंस अपने यूट्यूब पे दे दीजिए, हम आपके क्वेश्चंस नोट कर रहे हैं, लेकिन क्वेश्चंस का फ्लो अभी मैं देख रही थी बहुत ज्यादा हो गया है, तो it may not be easy for us to take every question.
So I'll tell you, if you are not able to take the questions, how you should approach to us later once this webinar gets over. And in this webinar, we are also going to talk to you about our help desk, about how to handle the grievances and what are the processes of stage 1 and stage 2 of admissions. So I'll just apprise you of a small presentation. That is live. So it's that. So is my video live? Can somebody from the admission branch confirm if the video is live? If the presentation. Yes, ma'am, it's work. Thank you, sir. So we had a press conference on 28th of May जब हमने अपना common seat allocation system launch किया था, उसी की हम आपको जानकारी दे रहे हैं अभी. तो 28 मई को हमने रजिस्ट्रेशन ऑन कर दिए थे और अब तक तकरीबन 60,000 बच्चे रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं. So which means we are happy to already welcome around 60,000 students to this platform of University of Delhi. This is the only platform for seeking admissions to University of Delhi. Our common seat allocation system बस यही एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप एडमिशंस ले सकते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में. तो बस अब ऑनलाइन सिस्टम में आपको कहीं जाना नहीं है, दिल्ली भी नहीं विजिट करना है इतनी गर्मी में, और आपको किसी दस्तावेज लेकर किसी कॉलेज में नहीं जाना है. आप जहां हैं वहीं से आप एडमिशन फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं. So our common seat allocation system जो हमने लॉन्च किया था 28 मई को, उसका ये लिंक है ugadmission.uod.ac.in और ये लिंक हमारी एडमिशन वेबसाइट admission.uod.ac.in पर भी उपलब्ध है. तो जब आप इस ugadmission.uod हमारे पूरे स्क्रॉलर में वेबसाइट के ऊपर आ रहा है, बीच में भी हमने दिया हुआ है, और इस वेबिनार की रिकॉर्डिंग भी आपके पास रहेगी. आप चाहे तो इसको दोबारा रिविजिट करके देख सकते हैं. So what you need to do is you need to log into this URL ugadmission.uod.ac.in. आपको यहाँ लॉगिन करने से लिए आपका CUET में अपीयर होना अनिवार्य है. जैसा सर ने बताया, रजिस्ट्रार सर ने बताया, we are offering admissions to undergraduate programs through this platform. These programs are 79 programs, undergraduate programs, which also includes 183 BA program combinations, and these are being offered in 69 colleges and departments of University of Delhi. हमारे पास तकरीबन 71,000 plus seats हैं, दो sanction seats हैं, और जिन programs में हम admission invite करते हैं, there is a wide variety of courses that we offer. We offer courses in BA program, BBA, BMS, BA Music, BA Led, BWalk, and BSc, BCom. So there is a wide variety of programs in which we offer admissions. These are honors as well as program courses. इसकी सारी जानकारी, कितने courses हैं, कितनी सीट है, किस कॉलेज में कितनी सीट है, ये हमने बहुत टाइम पहले अपनी वेबसाइट पे डाल दिया था हमारे बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन के थ्रू. तो अगर हमारा बुलेटिन है, तो हमारा बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन हमने लॉन्च किया था 27 फरवरी को. उसमें हमने सारी जानकारी डिटेल में दे दी थी कि हमारे कितने कॉलेजेस के अंदर रिजर्वेशन पॉलिसीज को फॉलो करते हुए कितनी सीट्स हैं और किस कॉलेज में कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफर होते हैं. जरूरी नहीं है ये सभी प्रोग्राम्स सब कॉलेजेस में ऑफर हो. There are colleges in which there are only 2 programs, whereas there are colleges where there are around 60 programs. So it's a wide complex matrix which you need to see before you start applying. So then once you come to our CSAS platform, हमारा CSAS का platform 3 phases में divided है. Phase 1, Phase 2, Phase 3. Phase 1 जो है ये हमने इसीलिए 3 phases में divide किया ताकि आपको कोई problem ना हो phases में admission के लिए apply करते समय, और हमें भी आपकी पूरी जानकारी सही रूप में मिल सके. जो Phase 1 है जो हमने 28 को launch किया है, उसमें हम आपकी सिर्फ एक general profile मांग रहे हैं जिसमें कि आप अपना पर्सनल डिटेल्स, अपनी एकेडमिक डिटेल्स और अपलोड करते हैं. लेकिन सभी बच्चों के लिए मैं ये बता दूं कि जब आप CSAS प्लेटफॉर्म पे आएंगे तो वहां पर सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, which will be on the left side of it.
लॉगिन पे नहीं, पहले आप रजिस्ट्रेशन बनाएंगे तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे और वहां पर अपना फॉर्म नंबर, सीयूईटी का जो एप्लीकेशन नंबर था वो डालेंगे, अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और एक कैप्चा कोड है उसे डालेंगे। ये डालते ही आपकी जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी थी सीयूईटी की, वो वहां पर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी के डालते ही फिर आप लॉगिन शुरू कर सकते। सो दिस इज अ 2-स्टेप वेरिफिकेशन प्रोसेस जिसमें जो सीयूईटी में आपने ईमेल आईडी डाला था उस पे आपको ओटीपी आएगा। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई होप एंड I'm wishing that every one of you do have your CUET email ID and your application intact and that only you are using those email IDs. जब आप उस ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन कर लेंगे फिर आपको आपकी स्क्रीन पे जो दिखेगा वो होगा पर्सनल सेक्शन। सबसे पहले पर्सनल सेक्शन का एक पेज खुलेगा। इस पर्सनल सेक्शन में नेम, फोटोग्राफ और सिग्नेचर्स पहले से डली होंगी। इस पर्सनल सेक्शन में आपको आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन डालनी होगी, जैसे कि आपका नाम, आपकी कैटेगरी कौन सी है, आपके अन्य फैमिली इनकम, माता पिता का नाम, आपकी बैंक डिटेल्स। ये कुछ चीजें हैं, कुछ फील्ड्स हैं जो आपके पर्सनल डेटा से रिलेटेड है। हम आपसे यहाँ पर रिक्वेस्ट करेंगे कि आप ये डालें। एवरी फील्ड ऑलमोस्ट इज मैंडेटरी। इसमें कुछ फील्ड तो आपकी सीयूईटी से ऑटो फिल्ड आई होंगी लेकिन आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन कुछ फील्ड्स आप चेंज नहीं कर पाएंगे, जैसे आपका नाम। नाम जो आपने सीयूईटी में दिया था वही रहेगा और उसको आप चेंज नहीं कर पाएंगे। रेस्ट ऑफ द डिटेल्स यू विल बी एबल टू एडिट देम, बट देयर विल बी अ वार्निंग कि आपने सीयूईटी में ये भरा था, यहाँ पर आपने ये डेटा चेंज कर दिया, ताकि आप उसको ध्यान से देख सकें। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू चेंज योर जेंडर, देयर विल बी अ वार्निंग इन सीयूईटी यू हैड एंटर्ड this gender and here you've changed your gender. For example, you've entered CUET on some category. Now you've changed your category. So there would be a warning that in CUET you had filled this category and in CSAS you are applying for this particular category. So that you should be careful of that the data is matching with your CUET data. It's important कि आपका CUET data से match करे। PWD कैंडिडेट्स जो हैं वो अपनी कैटेगरी नहीं चेंज कर पाएंगे बिकॉज दे हैड ऑलरेडी टेकन सम प्रिविलेजेस इन CUET विद रिस्पेक्ट टू दैट PWD कैटेगरी। सेकेंड पेज जो है वो आपका एकेडमिक डिटेल्स पे होगा। यहाँ आप अपने क्लास 12th के मार्क्स और उसका स्टेटस डालेंगे। अगर आपने क्लास 12th पास कर ली है तो उसकी डिटेल्स, किस सब्जेक्ट में पास किया है, थियोरी और प्रैक्टिकल के मार्क्स आप डालेंगे। अगर आपकी मार्कशीट में थियोरी और प्रैक्टिकल के अलग थे तो आप अलग डालिए, और अगर सेम डाले हुए थे तो वो डालिए। 12th और 11th अगर आपकी एक मार्कशीट थे तो आप उसमें से सिर्फ 12th के मार्क्स डालें। ये मार्क्स जो है हमें टाई ब्रेकिंग में हेल्प करें, इसलिए इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू फिल एक्यूरेट मार्क्स टू 2 decimal places. It is very important that you fill the marks very, very carefully. Otherwise, you may fall out of the tie breaking or you may fall in the tie breaking. In either case, if it is a wrong information, you will be kept responsible for it. Next section जो खुलेगा वो आपके पास आएगा ECA और स्पोर्ट्स। दिल्ली यूनिवर्सिटी में हम बहुत सारी सुपर न्यूमररी सीट्स में एडमिशन करते हैं, जिनमें से ECA और स्पोर्ट्स भी हैं। ECA मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। 14 एक्टिविटीज है जिनमें आप एडमिशन ले सकते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में थ्रू ECA, और 26 स्पोर्ट्स है जिन पे आप ऑफर करते हैं एडमिशन। इसके बारे में मैं जानकारी आपको आगे दूंगी। इनफैक्ट इसके ऊपर हम एक वेबिनार भी करेंगे dedicated only for ECA and sports supernumerary admissions. If you wish to take admission in ECA and sports, then your certificate should be valid for past 3 years, which means 31st of May 2021 से लेकर 30th April 2024 तक का सर्टिफिकेट जो होगा वही वैलिड होगा फॉर ECA and sports supernumerary quota. इसकी डिटेल जानकारी as I said we will share with you in our subsequent webinars. Then you will be taken to the document upload section, जहां पर आप डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करेंगे। जो भी आपने हमें डिटेल्स दी हैं उन सब से रिलेटेड हम आपसे डॉक्यूमेंट मांगेंगे। फॉर एग्जांपल रिजर्व कैटेगरी तो उससे डॉक्यूमेंट, फॉर एग्जांपल ECA स्पोर्ट्स आपने भरा है तो उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट, फॉर एग्जांपल अगर आपने BSc फिजिकल एजुकेशन भरा है तो उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, फॉर एग्जांपल अगर आप कह रहे हैं कि आप CW कैटेगरी में आ रहे हैं तो उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स। सो यू हैव टू अपलोड ऑल द डॉक्यूमेंट्स। यहाँ डॉक्यूमेंट अपलोड सेक्शन में आपकी फोटोग्राफ और सिग्नेचर ऑटो इंटीग्रेटेड आएगा और आप उसको चेंज नहीं कर पाएंगे।
Then it is important that you preview your application. तसल्ली कर लीजिए कि application ठीक है. Every field filled by you is accurate and is as per your documents. Every date, every field, your father's name, your mother's name, every detail. ये step बहुत important है. Payment करने से पहले कि आप अपनी सारी details बहुत ध्यान से देख लें कि सब ठीक से भरी हुई. तसल्ली से भरिए, कोई जल्दी नहीं है. अभी आपके पास कम से कम 20 दिन है. आप भरिए, आराम से भरिए. यहाँ गलती नहीं होनी चाहिए. प्रिंट आउट निकाल के देखिए और उसको ध्यान से भरिए. Then you will be taken to your payment. जो जिस तरह से आपने फील्ड भरी है उसके आधार पर आपकी पेमेंट्स होगी. फॉर एग्जांपल अगर आप किसी कैटेगरी से हैं तो हो सकता है आपसे 100 रुपीज मांगे जाए. अगर आप ओबीसी ईडब्ल्यूएस यूआर कैटेगरी से तो 250. इसके अलावा अगर आपने ईसीए के लिए अप्लाई होगा तो 100 रुपीज होगा. अगर आपने हमारे परफॉर्मेंस बेस्ड प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई होगा तो 400 रुपीज ऐड हो जाएगी. वॉट एवर दैट यू चोजन उसके हिसाब से आपकी पेमेंट होगी. So these are the application fees payments that you will be required to do. If you belong to UR, OBC, EWS, you will be requested to pay a payment of minimum just 250 rupees. If you belong from SC, ST, and PWD, then you will have to pay rupees 100. Then there is an additional fee if you're applying for EC and sports. We will request you to submit an additional fee of rupees 100. If you're applying for any performance-based programs such as music, such as BFA, such as BSc Physical Education, then there will be an additional 400 rupees to be requested for you. There are certain advices that we would like to share with you. कि हमारे अपने experience हैं और अभी मैं बता चुकी हूँ, मैं दोबारा repeat कर देती हूँ कि अपनी पर्सनल डिटेल्स, अपने कास्ट, सोशल कैटेगरी को बहुत ध्यान से करें क्योंकि ये फील्ड एक बार एंटर हो जाएगी तो चेंज नहीं कर सकते. Class 12 marks should be filled with utmost care because they will be used for breaking the tie. Ensure that every document that is submitted by you is valid and is in the prescribed format. ये format हमारे CSAS document में दिए हुए हैं. Ensure that हम कोई भी अंडरटेकिंग नहीं लेंगे. यानी कि अगर आपका ओबीसी सर्टिफिकेट हमें 31 मार्च 2024 के बाद चाहिए है तो इंश्योर करिए कि आप अपना सर्टिफिकेट बनवा लें और वो सर्टिफिकेट 31 मार्च 2024 के बाद का ही हो. हम कोई भी अंडरटेकिंग, एक्नॉलेजमेंट या मैंने अप्लाई किया है उसकी रिसीट मत डालिए. वो आपके एडमिशन को कैंसिल भी कर सकते हैं. तो अभी अगर आपको सर्टिफिकेट नहीं बना है बनवा लीजिए. अभी हम पोर्टल खुला हुआ है another 20 days तक और सब सर्टिफिकेट्स ऑनलाइन बन रहे हैं. हमें पता चला है कि सर्टिफिकेट सब ऑनलाइन. ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट भी आपका 31 मार्च 2024 के बाद. फॉर्म को बहुत ध्यान से फिल करिए. ना आप डेडलाइन का वेट करिए. डोंट वेट फॉर द डेडलाइन एज वेल एज डोंट बी इन अ हेस्ट व्हाइल फिलिंग द फॉर्म. बहुत जल्दी भी मत करिए और इसके साथ साथ आप डेडलाइन का वेट मत करिए कि लास्ट डेट आएगी मैं तब भरूंगी फॉर्म. So please be careful and fill your form very patiently and very slowly. So now I request my friend Dr. Anand Sonkar to apprise you of the phase 1. तो phase 1 में बस आपको इतना ही करना है. phase 2 हम तब लॉन्च करेंगे जब CUET के रिजल्ट्स आ जाएंगे. So wait for it. Phase 2 has not been launched right now. जब CUET के रिजल्ट आ जाएंगे तब phase 2 लॉन्च करेंगे. So Dr. Anand Sonkar will apprise you of the stages in phase 2. Thank you so much. So as ma'am has already mentioned that phase 2 will start after the declaration of CUET result, but do not expect it soon after the result has been declared. We also take some time for data integration and other things. So we'll notify when the phase 2 will start. So please look at the website of University of Delhi. We will release an official notice which will let you know that yes, now the second phase has begun. So in this, you have to again log into your dashboard and do the subject mapping. So what is the subject mapping? See, this is you have to let us know that what all subjects you have read in class 12 and in which all you appeared in CUET. So if you have already read the bulletin of information carefully, आपको पता ही होगा कि जिन सब्जेक्ट्स में आपने क्लास 12 में परीक्षाएं दी हैं आपको उन्हीं सब्जेक्ट्स को CUET में देना. तो आपको दो फील्ड्स दिखाई देंगे लेफ्ट और राइट पे. लेफ्ट को आपको अपने क्लास 10 12 के सब्जेक्ट्स भरने
आपने जैसे क्लास 12 में इंग्लिश पढ़ी है, आप लेफ्ट में पढ़ेंगे इंग्लिश, राइट में उसके कोरस्पॉन्डिंगली आपने किस लैंग्वेज में CUET दिया, सो वी आर रिज्यूमिंग कि आपने इंग्लिश में ही दिया, तो आप वहाँ पे भी इंग्लिश लिखेंगे। ऐसे फिजिक्स तो आप फिजिक्स से मैप करेंगे, इकोनॉमिक्स को इकोनॉमिक्स से मैप करेंगे, और इसी तरह आपको सारे सब्जेक्ट्स मैप करने हैं। सो एलिजिबिलिटी आपको उसके बाद आपके डैशबोर्ड पे दिखाई देगी कि कितने प्रोग्राम्स में आप एलिजिबल हैं, आपको उसकी एलिजिबिलिटी दिखेगी। और उसके बाद सबको सबसे इम्पोर्टेंट काम करना है, जो आपको अपनी प्रेफरेंसेस देनी है जिन प्रोग्राम्स में आप अप्लाई करना चाहते हैं। सो प्रोग्राम एक एस्पेक्ट है और कॉलेज दूसरा एस्पेक्ट है। जैसे आप एक पर्टिकुलर प्रोग्राम जैसे इकोनॉमिक्स से BCom ऑनर्स किसी पर्टिकुलर कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं, तो आप पहले उस प्रोग्राम को सेलेक्ट करेंगे, फिर आप उस कॉलेज को सेलेक्ट करेंगे, और वो आपका एक कॉम्बिनेशन बनेगा। सो प्रोग्राम प्लस कॉलेज इज वन कॉम्बिनेशन विच यू हैव टू मेक। लाइक दैट आप कितने भी कॉम्बिनेशन भर सकते हैं, जितने भी प्रोग्राम्स में आपके आप एलिजिबल हैं, आपको वो सारे आपके डैशबोर्ड पे दिखाई देंगे। आप उनको कॉम्बिनेशन बनाते जाइए और आप उनको फिर प्रेफरेंस वाइज अपनी लगाते जाइए, जिसको हम बोलते हैं प्रेफरेंस फिलिंग फेज। इसी से इस फेज का नाम दिया है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से करना है। जिस प्रोग्राम जिस कॉलेज में आप सबसे पहले एडमिशन लेना चाहते हैं, आप उसको सबसे ऊपर रखें। उसके बाद जो आपकी सेकंड प्रेफरेंस है, फिर थर्ड प्रेफरेंस है, एंड सो ऑन। आपको प्रेफरेंस फिलिंग के टाइम बहुत सारी और पेजेस से भी इंफॉर्मेशन आएगी और फ्रंट से कि ऐसे प्रेफरेंस भरे, ऐसे प्रेफरेंस भरे। पर आपको प्रेफरेंस भरते हुए सिर्फ एक ही चीज का ध्यान रखना है, वो कौन सा प्रोग्राम है और वो कौन सा कॉलेज है जहां आप सबसे पहले जाना चाहते हैं। आप उसी ऑर्डर को फॉलो करें और उसी के हिसाब से प्रेफरेंसेस लगाएं। और उसके बाद आपको उन प्रेफरेंसेस को सेव करना बहुत जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप उन्हें सेव करें। आप उन्हें सेव करते जाइए, आप बीच बीच में भी सेव कर सकते हैं, आप उन्हें सेव कीजिए और आगे बढ़ते जाइए। सो जब आप ये देखेंगे, आपको उसमें सारे प्रोग्राम्स कॉलेज प्रेफरेंसेस दिख जाएंगे। ये अभी हमने सारा बता दिया। इसके बाद फिर हम आपको एक सिम्युलेटेड रैंक दिखाते हैं, क्योंकि अक्सर बच्चों की ये शिकायत आती है कि हमें पता ही नहीं लग रहा उस कोर्स में कितने बच्चे हैं, हमसे आगे कितने बच्चे हैं, हमें वो प्रोग्राम मिलेगा या नहीं। सो वंस दिस प्रेफरेंस फिलिंग फेज इज ओवर, आफ्टर द लास्ट डेट, आपके डैशबोर्ड पर ही आप एक सिम्युलेटेड रैंक देख पाएंगे। जिस प्रोग्राम में आपने अप्लाई किया है, आपके रैंक और आपकी कैटेगरी के हिसाब से आप वहां पे लगभग, तो वो एक सिमुलेटेड रैंक दिखेगी। इसके बाद हम दोबारा इनको मौका देते हैं कि आप चेंज कर सकते हैं। फिर हम आपको फिर एक मौका देंगे, क्योंकि अगर आपने कोई प्रोग्राम सबसे ऊपर बढ़ा था, आपने देखा कि भाई मेरा रैंक तो कुछ 1 लाख में आ रहा है, फिर आप उसको चेंज कर सकते हैं। सो आप उसको रीविजिट करें, अपनी रैंक्स को रीशफल करें, जो प्रेफरेंसेस आपको और लग रहे हैं, आपको मिल रही हैं, वो आप ऊपर ले जाएं, नीचे ले जाएं, इट्स प्योरली फ्री। तो आपके पास ये एक लास्ट अपॉर्चुनिटी होगी अपनी प्रेफरेंसेस को रिवाइज करने की। आप ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और रीऑर्डर कर सकते हैं। और इसके बाद आपको सबसे जरूरी जो काम करना है, आपको सेव करना। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सेव योर प्रेफरेंसेस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू सेव योर प्रेफरेंसेस। आफ्टर दिस वी कम टू दी admission come allocation come admission. Now after that there will be allocation. Again, allocation list will not be made public, they will be available on your dashboard. So please look at the website of University of Delhi. We will declare an allocation schedule. All the dates will be clearly mentioned when the allocation will be live on your dashboard. Log in again on your dashboard and see what allocation has come to your dashboard. Now this allocation will be done keeping these three things on mind, which you can see on the screen. Your program specific merit, you're meeting that merit on your category, because there will be different allocations in these categories, BPAR, CNCL, SC, ST, EWs, and categories, and the availability of seats. So accordingly, there will be allocation, and as soon as the allocation is done, then this important phase comes. So the seat will be allocated to you on the dashboard. Then you have two things you can do, whether you accept it or you do not accept it. This do not accept option is for those who want to leave University of Delhi and go to some other University of Delhi, some other place other than University of Delhi. But if you accept the seat, your admission form will be screened by the college you have. They will screen your form, they will look at all the documents, they will look at the eligibility, they will see all other relevant things which are required, and then they will either reject your form, approve your form. For rejection, there can be certain reasons like you are not meeting the minimum eligibility, or you are not meeting the program specific eligibility, or there are documents which are not in. So for that also, colleges will send you mail. So, it's advisable that once you accept the allocation,
please keep looking at your dashboard. There will be queries which will be raised by the institution in which you are seeking admission. So they will send you emails which will be available in your registered email ID and also on your dashboard that there is problem in so and so document, please send a revised document or whatever the case may be. So it's very important that keep in mind that once the seat allocation has been accepted, keep looking at your dashboard very regularly so that you get to know that when you have to answer a query, if it has been asked. So whatsoever the condition is, once the form is approved, then there has to be a fee payment. Now in fee payment also, you have to be very careful. The fee payment is also only from your dashboard. Okay, login, there will be a tab which says fee payment, press it and pay the fee. It will take you to the payment gateway. There are various modes. You can by UPI or net banking or debit card, credit card, whatever facility is available. By that, you pay the fees. Please do not try to look for the fee link on the website because there have been a lot of instances when we get complaints that we made payment, it went somewhere. So please make the payment only from the dashboard. And so as in the beginning, also I mentioned that if you do not accept the seat, you do not take any action, then we assume that you are not interested in taking admission at the University of Delhi and you will be out of the CSAS regular allocation. Then once your you have accepted seat and you have paid the fees, then there is another option available, which is upgrade and freeze. Now there are multiple preferences you will get. It's not necessary that in the first instance you will get your first preference. So those who do not get their first preference, they will have this option to upgrade and or use freeze. If you are happy with your allocation, you can press the button freeze. And if you want to upgrade, you can press upgrade. So if there is a next round of allocation, then you will be upgraded as per the program specific merit, availability of seats and the category. So it says that if there are n number of rounds, then of course the upgrade facility will be available after the end of each round. So this I have already explained that seat will be allocated. You accept it, verification of document, then allocation is approved and pay the fees and so then we also have another provision which is called mid-entry. So this is for those people who initially failed to register, so they can do it at a later time with paying a fee of rupees 1,000. Now, before this, whatever allocation has been done, you cannot claim that you were eligible in these cases and you should be given a seat there. So whatever seats has been filled, this will be not applicable to. And this is also not applicable to those programs where the trials are. ECA. So like sports, ECA, Faculty of Music, there are a lot of programs where they call candidates for trials, even for BFA, Bachelor of Fine Arts. So in those programs, of course, this provision is not. Then we also have a dedicated sports and ECA reservation for the students who come from this field. So there are about 26 games or sports which are available in this, and there are 14 categories of ECA. So details of this, they are again available in the bulletin of information. You can see. We'll do a webinar. Yeah. Maybe next week, dedicated only to ECAs. Okay, so I think we'll give you more details, very exclusive details about these programs, what these categories are, what are the documents to be required in there. So please keep looking at University of Delhi website. We'll announce this webinar soon, which will be dedicated. Then we also have a lot of supernumerary quotas for people of benchmarkability, for people from armed forces, especially students from Jammu and Kashmir who avail Prime Minister's special scholarship, from students from Sikkim and orphans as well as single girl child. So for these also there are a lot of details which were announced in the press conference. I would request Haneet ma'am to just mention about single girl child because that we have started from this session. So from this year onwards, only in these undergraduate programs which we have launched on 28th of May, we have started another supernumerary category, which is single girl child. In this, a child, she should be the only child of the parents and there should not be any sibling. So अगर आप सिर्फ एक ही बच्चा है और आप लड़की हैं, तो आप इस कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं. इसके लिए हमने एक सीट हर प्रोग्राम में रिजर्व की है. तो जैसा कि डॉक्टर आनंद सोनकर ने बताया, तकरीबन 1500
कॉम्बिनेशन है, तो वी हैव अप्रोक्सीमेटली 1500 सीट्स. हर प्रोग्राम में एक सीट रिजर्व है सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए. To do this, you will also have to give an affidavit. इस affidavit का हमने जो प्रारूप है वो हमारे CSAS डॉक्यूमेंट में एनेक्शन में दिया हुआ है. वो आप एनेक्शन 4 में दिया हुआ है, तो उसमें आप डाउनलोड करके उसे आपको किस कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से करवाना है वो हमने जिक्र किया हुआ है. So you have to give a reference to that, and it should be duly attested by SDs and STM और any other जो हमने उसमें दिए हुए हैं. There's a long list we have given here. तो आप उसमें से देखकर उसके लिए हाँ नोटरी से मत करवाइएगा. इनफैक्ट एनी सर्टिफिकेट जो है वो जो हमने आपको दिए हुए हैं उन्हीं कर्मचारियों के थ्रू अटेस्टेड होना चाहिए. बाय द वे वी डोंट वांट एनी सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स. We want you to scan your document and upload it. We don't want your self attested documents. Similarly for orphans also, मैं शायद orphans का भी बता देते हैं. Please बता दो. Orphan भी एक लड़का और एक लड़की जिनके माँ बाप नहीं है वो orphan में अप्लाई कर सकते हैं. यानी आपके दोनों ही अगर माँ बाप नहीं है तो बायोलॉजिकल पेरेंट्स नहीं है तो आप orphan कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं. To apply in the orphan category आपके पास डेथ सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके दोनों पेरेंट्स का, माता पिता दोनों का होना चाहिए, या फिर आपका किसी ऑर्फनेज से अगर आप एसोसिएटेड है तो उसका होना चाहिए. तो these are the supernumerary quotas in which we admit students to University of Delhi, and this also brings us to the last slide where we would like to share with you कि जो भी हमने information दी है ये हमारे YouTube चैनल यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के YouTube चैनल पर उपलब्ध है. हमारी एडमिशन वेबसाइट के ऊपर भी उपलब्ध है admission.uod.ac.in. हमारी इंफॉर्मेशन जो है हमारे पास एडमिशन सपोर्ट सिस्टम है और ये सभी एडमिशन से रिलेटेड जो हमने आपसे जानकारी शेयर की है ये हमारे कुछ जानकारी हमारे बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन में है जो आपके साथ आइकन दिख रहा है और कुछ जानकारी जो हमारा CSAS डॉक्यूमेंट है जो हमने लॉन्च किया उसमें है. आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी एडमिशन वेबसाइट को आप रेगुलरली देखते रहें और उसको हमसे संपर्क में रहें और जो इंफॉर्मेशन हम हमारी ऑथेंटिक वेबसाइट पे है उसे ही रेफर करते रहें. The information is available. My colleagues have taken the admission branch every year takes a lot of effort in helping the students, and I feel really pride and happy to share with you that everybody in the admission branch as well as many people from the colleges are very alert in helping you all. So a lot of colleges have also opened certain help desks, and we have also launched our help desk at the admission branch. जब मैं आपसे अभी बात करी तो हेल्प डेस्क पे काम चल रहा है और बहुत सारे बच्चे हेल्प डेस्क पे काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हेल्प डेस्क पे काम कर रहे हैं. इंफॉर्मेशन आपके पास टेक्स्ट, विजुअल और वीडियोस के माध्यम से है. अगर आप चाहें तो आप पढ़ना चाहते हैं तो आप टेक्स्ट देख लीजिए जैसे बुलेटिन है. अगर आप वीडियो के फॉर्म में देखना चाहिए तो हमारे इन वेबिनार्स को जरूर अटेंड करिए और अगर आप फ्लो चार्ट में देखना चाहिए तो इन्फोग्राफिक्स में भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है. चैटबॉट के थ्रू भी आप हमसे बातचीत कर सकते हैं लेकिन only between 10 to 5 o'clock. ईमेल्स पे आप हमें लिख सकते हैं, फोन कॉल भी कर सकते हैं between 10 to 5 p. So ये कुछ प्रोविजंस हैं जो हमने आपके लिए दिए हैं. अगर आप YouTube पे इसको दोबारा देखना चाहें तो आप दोबारा भी देख सकते हैं. And lastly, we would like to also share with you that the University of Delhi, apart from CSAS, अगर हमारे पास कुछ जानकारी आती है कि कई बच्चे किसी ने अगर CUET का फॉर्म ठीक से नहीं भरा या CUET मिस हो गया या फिर वो CUET के माध्यम से एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं, क्लास 12th के बेसिस पे लेना चाहते हैं, तो हमारा स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग या जो फीमेल कैंडिडेट्स है दिल्ली NCT की वो नॉन कॉलेजिएट वुमेन एजुकेशन बोर्ड यानी NCWEB के थ्रू एडमिशन ले सकती है. तो ये दो प्लेटफॉर्म्स है जहां पर आपको CUET के थ्रू एडमिशन लेना अनिवार्य नहीं है. So I think with this we end our PowerPoint, and now I'm joined by my colleague Glory Madam from the admission branch, and ma'am would now take the questions that we have received on through YouTube and otherwise also. इसके अलावा भी अगर आपको कोई जानकारी चाहिए हो तो हमारे FAQs भी हैं. हो सकता है जो सवाल हमसे पूछ रहे हैं वो हमारे frequently asked questions में पहले से ही उपलब्ध. So with this we end this PowerPoint and we'll take your questions. Good luck to everyone who is joined with us and are keen to take admission in the University of Delhi.
we are also ready to welcome you. Yes, ma'am. Glory, ma'am, would you? So, any questions that you would like us to address? Am I audible? Yes, now you are. Hello? Yes, yes, you are audible. Hello. Gloria. Okay, thank you, ma'am. Sir, I can't see the questions. How do I can't see the questions. Are there questions coming in? Yes, there were a lot. In the YouTube on the panel, the left panel, we'll pick some in the meanwhile. See, if you go to the panel on the YouTube channel, there are a lot of questions that were scrolling. So one of them that, yeah. Yes, ma'am. Yeah, ma'am, I've locked in my phone. Probably I'm not able to see it right now. If you can just give me some time, or in the meantime, Anand sir, if you can just take it up. Well, Hanif ma'am, I would like to tell you the queries which we have been receiving. It's mostly about, the attestation of documents. Candidates have been asking that, we have uploaded the documents which were not attested. So, like, will our registration be cancelled or something like that? They are very much worried about it. No, so, if you've not uploaded your attested document, don't worry. The only thing that you have to worry about is that the document that you've uploaded is a valid document. It is within the dates in which we request you to do, if the date is a requirement, and also it should be attested by by a not by a notary. Glory, ma'am, can you please put your mic at mute in the meanwhile? So आपको अटेस्ट नहीं किया है कोई हमने मांगा भी नहीं है कि आप अटेस्ट करें. What you need to be careful about is that the document is true to the requirements that we request you to do. I think there are. I think I can see one more question from Naman Chawla, that will additional subjects of class 12 be considered for admission? So as many subjects that you have given in class 12 will be considered, provided you have given CUET also in those subjects. In CUET only 6 subjects were allowed, और आपके 12th में भी शायद 6 ही दिए होंगे, और अगर आपने जनरल टेस्ट दिया तो आपने 5 में ही CUET दे पाए होंगे. अगर वो 5 आपके चाहे एडिशनल में हो चाहे क्लास 12 के मेन सब्जेक्ट्स में हो, बस वो 5 आपके जरूर मैच होने चाहिए. और अगर आपके 6 भरे हैं तो वो 6 के 6 आपके CBSE से मैच क्लास 12 से मैच होने चाहिए. And Hanif ma'am, another important, like the most common question we are getting is about the like email ID and OTP. That So they are not able to retrieve their email ID which they had given in NTA. so that's very important. जो NTA में email ID थी, OTP तो उसी पे ही जाएगा. आप will try, अगर आपके पास नहीं है तो आपका जो registered phone number था उस पे देखते हैं, लेकिन अभी तो provision आपकी email ID का. I think, sir, you can take one question that is coming is if you are eligible for music honors through ECA. So I think they can't do no, that. yeah, you take that. So music honors, it has separate eligibility, and I think you have to see, and you have to look at the website of the Department of Music. They will separately they will issue a list for auditions. So I think that is very important for you to appear in the auditions which are conducted by the Department of Music. So, and then they will give 50% weightage to the auditions and 50% to the CUE. Yes, in music, yes. And then it ECA is not through ECA. ECA allocations would be done in each program up to a 5% seats in across the colleges, but not in music honors. Music honors. So I also saw another question that I have given, the scroll went up. There's another question that maybe you can take. That person said that I have taken 1 language and 2 domain subjects. Will I be eligible? I think that's also a very common problem which we get. See, I think, we released the Bulletin of Information in the month of February itself, where the eligibility for each program was mentioned very explicitly. So for most of the programs, I'm saying for most of the programs, the eligibility is 1 language and 3 domain subjects. Although we do have certain programs where you can take admission by 1 language,
one domain subject and general test paper. So it depends what are you actually targeting. So if you're looking for primarily some honors courses like political science, geography, politics, the eligibility is one language plus three domain subjects. And there, if you have not appeared in a minimum of 4 papers, then it will be difficult for you to secure the position in an honors program. But of course, there are certain other programs like BA program also is one program where there are dual eligibility. Either you can get in by one language, 3 domains, or one language plus general test. So if you have missed out in appearing all the papers, I request you to go through the bulletin of information again. There are some programs where you still be eligible. So try and then give your preference for. In fact, Anita, when they will try and fill up the CSAS phase 2, they will be able to see only those programs where they are actually eligible. Correct. They'll be able to select only those programs in which I think this is also a very frequent query we get, that I'm not able to see many programs. So the reason behind that is that you are not eligible in them. So your eligibility will be shown in phase 2 on your dashboard only according to the subjects in which you have appeared in CUET and the subject mapping which you have done. And be very careful when you are doing the subject. Also, there are a lot of queries on cutoffs. कि कट ऑफ कैसा जाएगा इस साल, तो पहले तो हम आपको ये बता दें कि I think cut off as well as merit list. They talk about these two things a lot. So देखिए, there is no merit list, there is no cut off, because it's a very wide and a complex system, and a fair and a transparent system. The thing is that we take your preferences. Your preferences would be different from, unless, for example, my preferences, even though we've got same marks, my preferences would be different from his preference. So depending on the merit, depending on the preference, depending upon the category, depending upon the availability of seats, ये बहुत सारे rules and regulations हैं जिनके basis पर allocation होता है. तो हम ये नहीं कह सकते कि cut off तो कोई system नहीं होता है. But we'll try that this year there is some more information that is made available on the dashboard of the candidates. For example, with every list, we'll try that at least you know the minimum marks at which the admission had been taken in a particular round. This we'll try to do, but it's very difficult to say anything about any cutoffs in this particular aspect. What you should be careful about is कि आप अपनी preference list ठीक बनाइए. ये जो आपकी preference list है, ये माध्यम बनेगी पूरे एडमिशन साइकिल का, चाहे ECA के थ्रू एडमिशन होने हो, चाहे स्पोर्ट्स के थ्रू, चाहे किसी भी सुपर न्यूमरी के थ्रू. तो आपकी ये जो प्रेफरेंस शीट है, ये बहुत, जैसे कहते हैं ना, एक सैक्रोसेंट हो जाएगी. एक बार जो आपने सबमिट कर दिया, ये पूरे एडमिशन का आधार बनेगी. ये प्रेफरेंस शीट जो आप एक बार बना लें, ये ना तो आप इसमें कोई प्रोग्राम ऐड कर पाएंगे, ये ना ही डिलीट कर पाएंगे. तो ये प्रेफरेंस शीट आपके लिए, हाँ, कुछ आप रीशफलिंग कर पाएंगे, जहां से आपको एडमिशन मिला उसके ऊपर की प्रेफरेंसेस को रीशफल कर पाएंगे, ऐड डिलीट नहीं कर पाएंगे. तो इसलिए प्रेफरेंस शीट पे थोड़ा ध्यान दीजिए अभी से, और उस पे थोड़ा काम करना शुरू करें. दिस इज द एडवाइस दैट वी वुड लाइक टू गिव यू. एंड प्लीज फॉर प्रेफरेंस शीट ऑल्सो trust your knowledge, trust your intuition. Look at, there are certain things that you may look at कि आपको वो कोर्स करना है कि नहीं करना है, इसके बारे में ध्यान दीजिए. आप उस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते, ये ध्यान रखिए. वो कॉलेज आपके घर से कितना दूर है, उस कॉलेज की उस प्रोग्राम की फीस कितनी है, उस कॉलेज का NAT का एक्रेडिटेशन कैसा है. अगर आपको डिसीजन लेने हैं तो ये कुछ पैरामीटर्स को लेकर आप डिसीजन ले सकते हैं. लेकिन पहले ले. हाँ, लेकिन पहले ले ले, अभी ले ले. हाँ, अभी ले ले, क्योंकि जो आपने डिसीजन अब ले लिया और प्रेफरेंस शीट भर दी, ये फिर बाद में चेंज नहीं होगी. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट जो है बहुत ध्यान से करें. I think Glory ma'am has also joined. So ma'am, are you now ready? Yes, ma'am. Sorry for the inconvenience. I can see some of the questions out there now. We're getting a lot of queries regarding if a candidate has chosen some supernumerary quota, then is he or she available? Is he or she, will be, whether that person will be considered under your category? So this is one question which has been coming over emails a lot. Yeah, so we do have that. This is also a very common query which they get. See, once you're applying in a supernumerary category, you will be getting multiple allocations. If you're applying in one supernumerary category, a regular allocation.
as well as an allocation in the supernumerary category, depending upon your merit. So that seat, of course, is very much different from your normal allocation. So if a candidate is applying in a either UR, OBC, or SC/ST category and an additional supernumerary category, so there goes an additional allocation. So, for example, you may be applying in ward quota, sorry, not ward quota, CW category. So armed force category as well as sports or ECA. So you will have one allocation in CW category, one allocation in these sports or ECA, and then your routine allocation also. Now at that time, it is very important for you to select any one. You can't take admission in all of them. So once the allocation comes on your dashboard, please look at the dashboard, decide it then and there. Because I think the upgrade facility is available only in the program which you have selected. Okay. So we'll assume that, out of the two, you are, choosing one over the other and you are leaving. So you have to be very careful at that. Sir, can we also have an answer for students who have this problem? Yeah, sir, can we also have an answer for those students who have a query regarding regarding the option of, suppose in case where the date of birth is not mentioned in the class 10 certificate, then how do they do that? The date of birth, they have to upload something, but then it's not mentioned in the 10 certificate. So can we have an answer also, the option of merging two documents and uploading as one? So you can, if you don't have your date of birth in class 10 certificate, you can upload your birth certificate. Primarily, we need this for tie breaking. If we have to go to that level of breaking the tie, so this will be required only at the time of breaking the tie. So अगर आपके 10th की certificate नहीं है, तो आप अपना वो डाल सकते हैं, class 10 birth certificate डाल सकते हैं. I think it's very Another important query coming in is for those. Yeah. So may I continue? Yes, please. Hello. Yes, please continue. Yes, sir. We also have a lot of query. Yeah, thank you. We also have a lot of query coming from students who are appearing, who have reevaluation papers, or they have compartment exams. So they're asking us, what should they fill up right now? See, support with respect to this, we request you to please read the chapter in CSAS which talks about change in class 12th results. If the re-evaluation results are 17. Yes, chapter 17, yes. So please refer to that chapter wherein we have clearly stated the steps that you should take with respect to change of your class 12th result. If your class 12th results get changed when your marks are revised, then you may enter through mid-entry. If you have a compartment and you clear your compartment by the time the lists are announced, then again you can appear through the mid-entry provision. But please go through that chapter, as ma'am said, chapter number 17, very carefully. Ma'am, it's also important that they fill up today as per the existing documents. That's true. I mean, isn't it? That's true. So अभी तो आपका जो status है आप वही भरेंगे. जब आपका result revise होगा, then you will have to contact us. And you can't speculate something. Yeah, something which is not at present there. You have to go as per the document. Correct. We also have a question coming in about the cutoffs. So can we have an answer for that as well? Yeah, actually, Glory ma'am, when you were trying to join at that time, Harit ma'am has already answered this question. So this has been taken care. Okay, thank you. Okay, thank you. You take it. One more question. So there's, you take it. Yeah, so Glory ma'am, I can also see certain questions like for those boards where the mark sheet has not been released so far. So the students are asking what to do. And for some of them, it is also not available in the DigiLocker. So I would like to just clarify, for those boards where the mark sheets in hard copy has not been released, you can, number one, of course, you can try downloading it from the DigiLocker and that can be uploaded directly. We can verify it or authenticate it from the DigiLocker. And second, if it is not available in the DigiLocker also right now, there must be some place where you have seen your marks. So as of now, take a screenshot of that thing, upload it now. Maybe later you can update it later, or once you have been allocated a seat, the college will raise a query and will ask you to supply the mark sheet then. So I think that's not a matter to worry right now. Whatever you have, like from wherever you can get the information on the result, just upload it right. But please follow up for your mark sheet and try to get it.
I think Hanif ma'am, we are getting a lot of queries and we'll not be able to take them up. So I would like to suggest maybe, they can write it to us. We have our dedicated email ID, ug@admission.du.ac.in. So those queries which we were not able to take up, I request you to please write to us. We are also available on the chat board, and the phone lines will also be functional soon, 2700 6900. I'm just repeating the number, 2700 6900. And if you're calling outside from Delhi, then add 01. So we'll be Also, available. this is available only between 10 to 5 p.m. Our chatbots are also available only between 10 to 5 p.m. You can write to us, email us. If you have any query, we will try to respond to your queries very, very soon. And so with this note, we end this webinar. अगर आपने कुछ miss किया तो आप rewind करके दोबारा देख सकते हैं. The recording will also be available on the official YouTube channel of University of Delhi, Univ of Delhi. You can just see it anytime at your leisure. And I think before we close in, I would just like to quickly thank the university officials for sparing their valuable time, especially the registrar sir, who, despite of being so busy, he joined us and guided you. Also to and in fact, the entire team of the UCC and the admission branch also, who have been working so hard for it. So please write to us, connect to us in case of, and wish you all the best. Please fill the form carefully. Yeah. Good luck and welcome to University of Delhi. When you join, we will hopefully see you. Have a good day. Thank you.